अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस बिना एक्सपेरिमेंटेशन के वी कैन कॉल इट एज क्वैक साइंस, right? But without experimentation, how can you come to any kind of theory? How can you come to any kind of law? How can you come to any kind of theory, right? So during the Renaissance phase, experimentation science started, it was based on experimentation rather than based on faith. और उसके सबसे बड़े एग्जांपल थे कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर और बेसिलियस. If we talk about them, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोपरनिकस की, कोपरनिकस was and he was born in modern day Poland. That was at that time part of the Prussian Empire, and he was the first to theorize the heliocentric theory. So what is heliocentric theory? तो रेनेसांस से पहले यूरोप में ये बिलीव था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. कोपरनिकस became the first person to say कि नहीं भाई ऐसा नहीं, right? It was not the earth that was the center of the universe, rather it is the sun that is the center of the universe, right? So he gave the heliocentric theory. ठीक है. अब गैलीलियो भाई को लगा, he was later in 17th century, गैलीलियो भाई को लगा कि भाई जो कोपरनिकस ने कहा, बस कोपरनिकस के साथ कुछ नहीं हुआ, तो गैलीलियो thought कि भाई I can also build upon that. So he also supported the heliocentric theory of Copernicus. Along with that, he also invented the telescope, the microscope and the thermometer. ठीक है. लेकिन he was not very well respected by the church. जिसने कहा कि भाई ये चीज तो ज्यादा हो रही, चर्च को लगा ये लोग बाइबल के अगेंस्ट बोल रहे हैं, and therefore Galileo was punished and he was sent to life imprisonment, which later got converted into house arrest. And last years of his life, he died in a house arrest. सोचो एक आदमी who is doing some kind of innovation, he was put under life imprisonment. ठीक है. Then Kepler was another important astronomer from Germany who actually gave the first planetary motion or law of planetary motion. और उन्होंने कहा था कि planets जो है वो ऑर्बिट करते हैं elliptical फैशन में. अभी आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस जो हमारे यहाँ सीजन्स होते हैं. ठीक है ना. तो दिस इज द साइंस. इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्टिस्टिक रियलिज्म एंड पर्सपेक्टिव, ये हमने ऑलमोस्ट देख लिया है कि रेनेसांस पीरियड में वो हेलो होता था, वो द थीम वाज वेरी आर्टिफिशियल. बट ड्यूरिंग द रेनेसांस आर्टिस्ट फोकस्ड ऑन ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एक्सप्रेशंस. The background was more natural. The background was more, it looked like it could be any city, it could be any part of the nature. ठीक है ना. So that is something that was there in the Renaissance period. इसके अलावा one very important thing which happened in Renaissance period was the printing revolution. देखो प्रिंटिंग जो थी, जो प्रिंटिंग प्रेस था, उसका इनिशियल इन्वेंशन चाइना में हुआ था, बट जो मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस थी वो आई थी जर्मनी में. गुटेनबर्ग was the person who invented the modern printing press. ठीक है ना. And when printing press, and mind you, I will tell you this thing that before this period in the Islamic world, we call from 7th to 14th century, the period is called as the golden age of Islam. Why? Because when Europe was suffering from dark age, it was the Arabs who were the symbols of openness, symbols of innovation, symbols of literature and language and science. ठीक है ना. But जब ये printing press आई तो जो ग्रैंड मुफ्ती थे ऑटोमन्स के, they gave a fatwa against the Gutenberg printing press कि ये अगेंस्ट इस्लाम है. And that is the reason why backwardness started in the Islamic world and Europe started progressing. So if we see the history of 600 years, it is when the Arabs were open, right? Then it was their golden age. When Europe started believing in openness, it started with its old golden age. ठीक है ना. अब जब ये प्रिंटिंग प्रेस आई, तो प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से जो जितनी नॉलेज क्रिएट हो रही वो छपने लगी और छप के स्प्रेड होने लगी. राइट. सी आइडिया इज दैट प्रिंटिंग प्रेस से मास प्रोडक्शन हुआ लिटरेचर का और घर घर तक लिटरेचर पहुंची. और जब लिटरेचर पहुंची तो साइंटिफिक आइडियाज भी पहुंचे, लिटरेसी भी इंक्रीज हुई एंड रिफॉर्मेशन के आइडियाज भी स्प्रेड हुए. जो रिफॉर्मर्स थे दे यूज्ड टू पब्लिश आइडियाज एंड दे यूज्ड टू स्प्रेड दैट आइडियाज टू वेरियस पीपल इन द होल वर्ल्ड. ठीक है. उसके बाद रैशनलिज्म इज अनदर फीचर ऑफ रेनेसांस कि रिलायंस ऑन लॉजिक एंड रीजन टू एक्सप्लेन लाइफ एंड नेचर. रैशनलिज्म का क्या मतलब है कि rather than depending on faith, you are depending on reason and logic to explain anything. और उसके दो जो इन्वेंटर थे वो थे फ्रांसिस बैकन एंड डिस्कार्टस. राइट. अब ये दोनों क्या बोलते थे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. तो जो फ्रांसिस बैकन वाज द फादर ऑफ एम्पिरिकल रैशनलिज्म, जो आज हमारी मॉडर्न साइंस है. फ्रांसिस बैकन यूज्ड टू, और ही इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ दैट, बिकॉज़ ही यूज्ड टू से कि भाई देखो ऐसा है, कोई भी चीज को ट्रस्ट मत करो, कोई भी बिलीफ को ट्रस्ट मत करो, कोई भी बुक को ट्रस्ट मत करो. आप जाओ उस फिनोमेना को ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो और फिर डिसाइड करो. फॉर एग्जांपल ही गिव अ वेरी गुड स्टोरी. ही सेड कि भाई आप ये मत मानो कि ये वाली सीड ज्यादा प्रोडक्टिव है. आप ऐसा करो कि लेट्स से आप 5 टाइप की सीड्स को उगाओ, उनको पानी दो. जो सीड से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, which that seed is more productive, that seed is more efficient, and therefore in future you should grow these seeds rather than growing the other seeds. Right. तो जो जितने हमारे आज साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स
बेकन की थ्योरी है, दैट इज व्हाई इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ एम्पिरिकल रैशनलिज्म। हर चीज को टेस्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो और फिर डिसाइड करो कि वो चीज सही है कि गलत है, ठीक है ना। सिमिलरली डिस्कार्टस जो थे, ही वाज मोर ऑफ द, ही बिलीव्ड इन फिलोसॉफिकल रैशनलिज्म। हिज आइडिया वाज दैट कि भाई हर चीज की, हर बिलीफ को डाउट करो और फिर लॉजिकली सोचो कि वो चीज पॉसिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल I believe, or let's say if I believe that there is no God, right? Or if I believe that there is no God, and I say that I don't believe God because I have not seen God. Till I have not seen God, how will I believe that there is a God? Right? Because X, Y, Z is saying that there is God. Why should I trust him? Right? So ultimately, Descartes was more philosophical in nature, तो जो logic, philosophy और mathematics है, वो कहीं ना कहीं Descartes के आइडिया से आई। Bacon was on the other hand based, he was more supportive of experimentation, experiment करके देखो। और Descartes believe कि सब चीज को डाउट करो, लॉजिकली सोचो कि वो चीज पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है ना। So ultimately the whole idea is that Descartes and Bacon started the new idea of rationalism कि भाई ह्यूमन रीजन को ट्रस्ट करो, आपको जो 200 ग्राम दिया है उसको ट्रस्ट करो, उससे सोचो चीजों को, rather than focusing or rather than completely believing on tradition and blind faith, ठीक है ना। नेक्स्ट इज स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, ये आई रेनेसांस में, ठीक है। और उसके सबसे बड़े एग्जांपल हैं हमारे कई लोग, जैसे यू हैव डियास, वास्को दा गामा, मैगेलन और क्रिस्टोफर कोलंबस। Diaz जो था, he was a Portuguese noble and he wanted to find the route to India because during that time एक ही रूट था यूरोप से इंडिया आने का, that was through land route, starting from Turkey and Central Asia। but उस पूरे हिस्से पे, टर्की और आसपास के हिस्से पे ऑटोमन्स का रूल था और ऑटोमन्स को ये मालूम था कि if you want to go to India you have to pass through us, so the traders and the other people used to face a lot of hostility। so basically Diaz thought कि भाई I will find a alternative route to India। उस टाइम पे ये मान्यता थी कि इक्वेटर के पास सी जो है वहां पे कुछ मॉन्स्टर्स रहते हैं, सी मॉन्स्टर, और अगर आपने इक्वेटर को पार कर लिया सी के थ्रू तो वो मॉन्स्टर्स आपको खा जाएंगे। दैट वाज द पॉपुलर बिलीफ ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है ना, ठीक है ना। इज रेनेसांस अ वन टाइम इवेंट? नो, इट वाज नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट वाज अ ग्रेजुअल इवेंट, राइट। इट हैपेंड ड्यूरिंग 300 इयर्स, ठीक है ना। तो अब दियास ने कहा कि भाई मैं ढूंढ के रहूंगा रूट, तो ही वेंट फ्रॉम यूरोप एंड ही ट्रैवल्ड ऑल पूरा अफ्रीका होते हुए नीचे तक आया, साउथ अफ्रीका, जो केप ऑफ गुड होप हम इसको कहते हैं, और वहां पे आके स्टॉर्म की वजह से वो मर गए, राइट। बट he found out कि भाई there is an alternative route, और ये कोई सी डेमन वगैरह नहीं है, ये मॉन्स्टर्स नहीं है, you can actually go to south of, through अफ्रीका के साउथ से होते हुए आप इंडिया जा सकते हो। he showed the first way and his work was later on built by the person called Vasco da Gama। वास्को डा गामा जो थे, उन्होंने कहा कि भाई अल्टीमेटली नाउ दैट डियास हैज डन सम वर्क, लेट मी, एंड ये शोकेस कि कोई सी डेमन नहीं है, तो लेट मी टेक द सेम रूट एंड लेट मी ट्राई टू यूज दैट रूट एंड रीच इंडिया। सो ही आल्सो वेंट थ्रू दिस रूट थ्रू केप ऑफ गुड होप एंड फ्रॉम देयर ही एक्चुअली ट्रैवल्ड टू इंडिया। ही केम टू द कोस्ट ऑफ इंडिया जहां पे ज़ैमोरिन थे, ज़ैमोरिन हमारे रूलर्स थे, एंड उनको उन्होंने गिफ्ट दिया, एंड दैट्स हाउ ट्रेड स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड पोर्चुगल। लेटर ऑन ट्रेड के बाद वो कॉलोनियलिज्म भी स्टार्ट हो गया एंड गोवा एंड फ्यू अदर एरियाज वर कॉन्कर्ड बाय यूरोपियंस। क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर हम बात करें तो he was technically born in Italy, but स्पेन ने इनको स्पॉन्सर किया कि भाई जाओ और न्यू सी रूट ढूंढो इंडिया का। So he traveled and he thought कि मैं वेस्ट से जाऊंगा। He thought कि वर्ल्ड जो है, जो ग्लोब है, वो छोटा है और वेस्ट में से मैं जाऊंगा तो मैं वापस जैसे लेफ्ट से सी द मैप। So he thought कि वेस्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ सी है, वेस्ट में सिर्फ सी है, और वेस्ट से अगर मैं ट्रैवल करूंगा तो ट्रैवल करते करते मैं यहां से, क्योंकि वर्ल्ड ग्लोब है, तो मैं यहां से इंडिया आ जाऊंगा बहुत इजी। That was his mistake because when he traveled from west and there was sea, suddenly he arrived in the land. And he thought that he had arrived in India, but unfortunately it was not India, or fortunately from him it was America, the new world. Nobody knew about America till the 15th century, right? And because he later realized he is not in India, he called them Indians, American Indians, Red Indians, and that's how the term Red Indians or the Native Indians arrived. Okay? Then if you talk about Magellan, Magellan was somebody who traveled all across the world. He was the first person to circumvent the whole globe. He traveled everywhere. He started from here, he took this Pacific journey and he traveled all over the world in the early 16th century. सोचो कितना हिम्मत चाहिए होगी, कुछ नहीं पता था कहाँ जा रहा हूँ, but he went and he traveled the whole world. So all these things brought new ideas, all that also brought this opportunities कि भाई वर्ल्ड में और भी अच्छी civilizations हैं जिनके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। Then religious reform and critique. So during the Renaissance period, they started questioning the church and its corruption and its rituals. Though atheism was not born during this period, atheism was born during the Enlightenment period that was following Renaissance, ठीक है ना। But this was the time जब they started questioning the church, its corruption, its rituals. इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे when we will talk about reforms or when we will study the Reformation period. Similarly, there was emphasis on education. नई यूनिवर्सिटीज बनी और उन यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट्स चेंज हुए, साइंस आया, केमिस्ट्री आई, बायोलॉजी आई, ठीक है, साइंस को यूज किया गया, लिटरेचर, क्लासिकल लिटरेचर को कन्वर्ट किया गया,
ठीक है ना, यूज ऑफ रिलीजन वाज रिड्यूस्ड, और प्रिंटिंग प्रेस से लिटरेचर लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ अक्रॉस यूरोप, एंड फाइनली अर्बनाइजेशन, क्योंकि नए रूट्स आए, तो नए रूट से क्या हुआ, ट्रेड स्टार्ट हुआ बिटवीन यूरोप एंड एशिया, और वहां से अर्बन मर्चेंट क्लास इमर्ज हुआ, और जब अर्बन मर्चेंट क्लास इमर्ज हुआ तो नए इमर्ज हुए, अच्छे शहर इमर्ज हुए, वहीं से फ्लोरेंस एंड ऑल दीस सिटीज वर बोर्न। इस टाइप से देखो, फ्लोरेंस वाज द फर्स्ट ग्रेट सिटी इन यूरोप, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ रेनेसांस, और दिस इज हाउ द रेनेसांस पीरियड वाज, ठीक है। रेनेसांस के साथ साथ ये सब पैरेलल हो रहा था। रेनेसांस स्टार्टेड इन 14th सेंचुरी, उसी के साथ एंड इट कंटिन्यूड टिल 17th सेंचुरी, उसी के साथ साथ कई और चीजों में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, और उसमें एक इंपॉर्टेंट था रिफॉर्मेशन, जो कि 16th सेंचुरी में आया, 16th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। रिफॉर्मेशन बेसिकली क्या था, इट वाज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट दैट टू रिफॉर्म द प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली एज वी हैव सीन इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द लेक्चर कि चर्च जो था, इट वाज डोमिनेटिंग एवरीथिंग, रोमन कैथोलिक चर्च, एंड इट वाज वेरी वेरी करप्ट, राइट। सो रिफॉर्मेशन वाज टेक्निकली, देखो जब तक आप रिलीजन को रिफॉर्म नहीं करोगे, तब तक आप साइंस में, तब तक आप बाकी जगह प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो दीज पीपल अंडरस्टूड कि जब तक हम रोमन कैथोलिक की ऑर्थोडॉक्सी को नहीं तोड़ेंगे, हम और फील्ड में भी रिफॉर्म नहीं कर सकते। सो दैट्स हाउ रिफॉर्मेशन स्टार्टेड इन यूरोप। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ द रोमन कैथोलिक चर्च ऑफ यूरोप यूज्ड टू बिहेव बिफोर रिफॉर्मेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी कि देयर वाज मॉरल करप्शन ऑफ क्लर्जी। जो क्लर्जी थे वो बात करते थे कि भाई अल्टीमेटली यू शुड गिव दीस वर्ल्डली लाइफस्टाइल, मतलब सिंपल लाइफ जियो, फेथ रखो, रिचुअल्स करो, राइट, डोंट शो ऑफ योर वेल्थ। बट these same priests used to live in lavish palaces, they used to enjoy luxury, have good food, good wine, right? So ultimately there was a gap between what they were preaching and what they were practicing. For example, if you see this is not exactly a palace of any king, this was the palace of the priest. You can see how luxurious that palace is. So ultimately you are preaching that you should live a simple life, but on the other hand you are doing this, ठीक है ना। Secondly, there was sexual immorality. So Catholic, अगर हम बात करें कैथोलिक रिलीजन में, it is not allowed for the priest to marry, it is not allowed the priest to have sexual relations. But during the medieval Europe there was widespread practice of concubinage system, which means they used to keep concubines, various concubines before marriage. They didn't used to marry them, right? And that literally hurted a lot of devoted Christians. कि भाई you are technically going against the main preaching, and this was also the violation of the clerical celibacy. कि भाई you have to remain, you have to remain celibate all your life. And there was also hypocrisy between what they were preaching and practicing. Third and very important word, as Piyush has said, there was sale of indulgences. Now what is indulgences? What is indulgences? जो क्रिश्चियन है शायद उनको ये चीज मालूम होगी। तो देखो क्या होता था कि इन क्रिश्चियनिटी, इफ यू आर कमिटिंग अ सिन, तो आपके पास तो आपको दो टाइप की पनिशमेंट होती है। फर्स्ट इज द स्पिरिचुअल गिल्ट, राइट? एंड स्पिरिचुअल गिल्ट जो है आपकी, वो ठीक हो सकती है इफ यू गो टू द चर्च एंड यू confess your sin, that I have committed this sin, please forgive me, right? So ultimately जब आप confess कर लेते हो तो जो spiritual guilt है वो आपकी ठीक हो जाती है। But second is temporal punishment. Temporal punishment means कि after life के बाद आप जो है काफी दिन तक purgatory में सड़ते हो, which means कि आप heaven तक नहीं जाते हो, आप वहीं पे रहते हो क्योंकि आपने sin किया है, ठीक है ना। So जो temporal punishment, जो after life punishment है, वो आपकी माफ नहीं होती है अगर आप कितना भी जाके confess कर लो, कितना भी जाके माफी मांग लो चर्च में। उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए जो हमारे चर्च थे उस समय, रोमन कैथोलिक चर्च थे, they used to give the certificates of indulgences. जैसे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भाई XYZ है, इसके चर्च ने इसका sin माफ कर दिया, now he is given a new chance, and now he does not have spiritual guilt, and he also does not have any, or he will also not suffer temporal punishment, or he will now suffer minimum temporal punishment. अब ये जो ओरिजिनली प्रैक्टिस थी, ये कैसे थी? इसमें ये था कि अल्टीमेटली जो चर्च था वो उन लोगों को बोलता था जिन लोगों ने सिन किया है कि आप 4-5 चीजों में इन्वॉल्व हो। आप सबसे पहली बात प्रे करो, चैरिटी करो, लोगों की हेल्प करो, ठीक है, और चौथा क्रूसेड में पार्ट लो, ठीक है, और पांचवा पिलग्रिमेज करो, जो इंपॉर्टेंट होली सेंटर क्रिश्चियनिटी के वहां जाओ, ठीक है ना। क्रूसेड में पार्ट मतलब अपने धर्म को बचाने के लिए फाइट करो। तो ये 5 चीज अगर आप कर रहे हो, तो अगर हम देखेंगे दैट यू आर डूइंग इट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, देन वी विल इशू दिस इंडल्जेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड यू विल बी फॉरगिवन फॉर योर सिन। बट हुआ क्या कि ड्यूरिंग द मिडिवल यूरोप देयर वाज अ ट्रेडिशन दैट स्टार्टेड वेयर दीस इंडल्जेंसेस सर्टिफिकेट्स वर गेटिंग सोल्ड। तो बेसिकली वो क्या बोलते थे कि भाई ठीक है, आप ऐसा करो कि हमको चैरिटी दे दो, हमको आप दान दे दो, या फिर चर्च को कंस्ट्रक्ट कर दो, इसमें 2 रूम यहां बनवा दो, 3 रूम यहां बनवा दो, और हम तुम्हारी गिल्टी माफ करें, ठीक है, हम तुम्हारे सारे जो काइंड ऑफ सिंस है उसको माफ करें, ठीक है ना। कुछ तो ऐसे भी इंसिडेंट हुए जहां पे द चर्च और द प्रीस्ट स्टार्टेड टेकिंग मनी कि भाई पैसे दो, मतलब ऑलमोस्ट प्रॉपर ब्राइबरी स्टार्ट हो गई
कि you give me money and I will give you indulgences study, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली इससे भी जो डिवोटेड क्रिश्चियंस थे, जो रैशनलिस्ट क्रिश्चियंस थे, वो काफी ज्यादा हर्ट, ठीक है? थर्ड, simony. Simony is basically the sale of church. So during the medieval time, the church positions was sold to not to people who were competent or who were men of religion, but there was lot of nepotism that was involved. ठीक है ना? जो nobles थे, उनके रिश्तेदार थे. They because church at that time had lot of money. So anybody who was in high position in church, he had access to lot of wealth, lot of resources. So nepotism start हुआ, जो powerful लोग थे, उनके लोग आने लगे. So that also created a lot of kind of resistance among the local Christians. Fourth and very important problem that church was absenteeism of clergy. तो जो हमारे प्रीस्ट थे, जो हमारे बिशप्स थे, इनको एक एक चर्च का इंचार्ज बनाया जाता था. But these people used to live away from the churches and they used to never visit the church. सोचो प्रीस्ट है, बट वो चर्च में नहीं जा रहा है. तो जैसे इंडिया में एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म था, जो स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में, इस टाइप का कुछ एब्सेंटिज्म क्लर्जी स्टार्ट हुआ यूरोप में. ठीक है? इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लाइटी. लाइटी क्या होता है? लाइटी बेसिकली जो लोग प्रीस्ट नहीं है, जो लोग चर्च में बैप्टाइज्ड हैं, they are believers in Christianity, but they are normal people. They are not technically, they are not monks, they are not priests. So they are called as laity. So laity पे 10% of their income उनको टैक्स में पे करनी होती थी to the church. It was called as tithes. It was called as tithes. ठीक है? अब बेसिकली क्या होता था कि इसके अलावा भी चर्च जो है उन पे एक्स्ट्रा फी, यस, उन पे एक्स्ट्रा फी पे करता था. उनसे बोलते एक्स्ट्रा फी को पे करने के लिए फॉर बैप्टिज्म, व्हिच इज टेक्निकली कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, मैरिज एंड ब्यूरियल. सबके लिए चर्च अलग से फी देता था. इसके अलावा इस 10% ऑफ द इनकम के अलावा, व्हिच वाज टेक्निकली इलीगल. ठीक है? इसके अलावा सिक्स्थ वाज थियोलॉजिकल रिजिडिटी एंड डॉगमेटिज्म. तो जैसे इफ यू टॉक अबाउट जो हमारा ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म, जब बुद्धिज्म और जैनिज्म इमर्ज हो रहा था, तो इट वाज सफरिंग फ्रॉम एक्सेसिव रिचुअलिज्म, right? And that laid birth, or that gave birth to Buddhism and Jainism that were more pragmatic. The same happened to the medieval Roman Catholic Church, right? जो चर्च था, फोकस था सिर्फ रिचुअल्स पे, फोकस था सिर्फ चर्च मेडिटेशन पे. There was no focus on improving the character of the person. There was no focus on personal faith. Everything was done through the church. Church was the middleman for everyone. तो बेसिकली आइडिया ऐसा बनाया गया था कि आपको कुछ भी चाहिए गॉड से, तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट द प्रीस्ट. यू कैन नॉट डू एनीथिंग अलोन. ठीक है ना? सिमिलरली लैटिन बाइबल की मोनोपोली थी, जैसे संस्कृत की मोनोपोली थी इंडिया में. तो लैटिन बाइबल सिर्फ लैटिन में थी, और बिकॉज लैटिन, एज आई टोल्ड यू, लैटिन वाज नॉट अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल. तो कॉमन लोग जो थे उनको बाइबल का लेसन कहां से मिलता था? थ्रू द प्रीस्ट एंड द पोप्स. अब प्रीस्ट एंड पोप, क्योंकि वो जानते हैं कि बाइबल की लैंग्वेज हम जानते हैं, ये लोग नहीं जानते, वो कुछ भी उल्टा सीधा उनको बताते थे कि भाई ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है. ठीक है ना? सो चर्च एक्टेड एज द गेटकीपर ऑफ ट्रुथ एंड इट एक्टेड एज द सप्रेशर ऑफ इंटरप्रिटेशन. ठीक है? सिमिलरली देयर वाज आल्सो सप्रेशन ऑफ डिसेंट एंड रिफॉर्म. ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या होता था कि इस सारे जो ऑपरेशन था इसके खिलाफ कुछ जो प्रीस्ट थे उन्होंने आवाज उठाई कि भाई ये चीज आप गलत कर रहे हो, ये चीज आप गलत कर रहे हो. ठीक है ना? तो अल्टीमेटली उनके साथ क्या हुआ? उनको मार दिया गया. जैसे हक्स फॉर द जॉन हक्स फॉर द प्रीस्ट फ्रॉम बोहेमिया इन चेक, एंड ही सेड कि भाई क्या कर रहे हो? यू आर करप्टिंग द ओरिजिनल रिलीजन दैट वाज प्रोपेगेटेड बाय जीसस क्राइस्ट. सो चर्च सेड भाई तुम बहुत सीधा बोल रहे हो. सो ही वाज एग्जीक्यूटेड. राइट? सो अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज रिफॉर्मेशन. ठीक है ना? तो व्हाट वर द कॉजेस ऑफ रिफॉर्मेशन? मेन 4 कॉज थे. पहला कॉज क्या था कि जो रिलीजियस करप्शन था और जो चर्च का क्रिटिसिज्म था, जो हमने अभी देखा, जो हमने 7 पॉइंट देखे. दिस वाज द रीजन बिहाइंड रिफॉर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन बिहाइंड रिफॉर्मेशन. इसके अलावा राइज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड सेक्युलरिज्म, जो हमारे इतने सारे लोग आए, एरास्मस आए, पेट्रार्क आए, राइट, प्रिंस आए, मैकियावेली आए. तो ऑल दीज ह्यूमन थ्योरीज दे एक्चुअली सेड कि भाई वी हैव टू फोकस ऑन ह्यूमन डिग्निटी. राइट? सो उसकी वजह से भी रिफॉर्मेशन की तरफ कदम उठाए गए. थर्ड इज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. राजाओं को लगा कि अगर हमें पावरफुल बनना है, अगर हमें स्ट्रॉन्ग मोनार्की बनानी है, अगर हमें स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट बनाने हैं, तो बहुत जरूरी है कि हमें इन चर्च की जो एक्सेसिव अथॉरिटी है इससे हमको रिलीफ मिले. तो जो रिफॉर्मिस्ट लोग आए, जो हम आगे इसके आगे हम देखेंगे, उनको रूलर्स ने, किंग्स ने भी सपोर्ट किया. ठीक है ना? कि अल्टीमेटली आप जो है हम आपके साथ हैं, आप हेल्प करोगे हमको, क्योंकि एवरी किंग वाज आल्सो फ्रस्ट्रेटेड सो मच पावर ऑफ द चर्च. एंड फोर्थली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आई, तो जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने अपने आइडियाज प्रिंट करके लोगों तक स्प्रेड करने शुरू हुए. तो जो एक मास, जो एक एलीट लेवल पे स्टार्टिंग में मूवमेंट था, विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, वो आम क्रिश्चियंस के पास वो इंफॉर्मेशन आने लगी. एंड दैट्स हाउ दे आल्सो सपोर्टेड द रिफॉर्मेशन मूवमेंट. तो मेजरली यूरोप में 4 टाइप के रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स आए थे, और इन चारों को हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट. ठीक है? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिगर था मार्टिन लूथर, who brought the Lutheran revolution. Martin Luther was a German monk. He was a priest, right? And he was in Germany, and he published a 95 thesis in 1570.
95 thesis और 95 questions were asked to the Roman Catholic Church कि आप तो इसका जिसमें सेल ऑफ इंडल्जेंसेस, जिसमें जो पूरा पॉम्प एंड शो था उनका, जो एवरीथिंग वाज क्रिटिसाइज्ड एंड एवरी क्वेश्चन वाज रेज्ड कि भाई आप बताओ आप क्यों करते हो ऐसे, राइट? सो मार्टिन लूथर he technically brought, or he actually brought these ideas, and he technically gave birth to a new sect called Protestantism. और उसमें बेसिकली जो उसका मेजर आइडिया वो ये था कि भाई सैल्वेशन जो है that will come through faith, not good work or through any church rituals. It will only come through faith. And he said that authority of Bible is final. Bible is the only source of religious authority. And Pope और चर्च अगर कुछ बोल रहा है तो वो, अगर वो बाइबल के बाहर कुछ बोल रहा है तो अल्टीमेटली आपको उसको सुनना नहीं है, वो बकवास कर रहा है. एंड थर्डली ही सेड कि भाई कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है प्रीस्ट के पास. हर एक क्रिश्चियन थ्रू पर्सनल फेथ डायरेक्टली अपनी बात पहुंचा सकता है गॉड को. यू डोंट नीड अ प्रीस्ट इन बिटवीन, right? And finally he rejected the correct practice of indulgences. He said the commercialization of indulgences have to be stopped. No, Martin Luther King Jr. अलग है, वो अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट था 19th century, sorry 20th century में यूएस में. दिस इज अ डिफरेंट, ठीक है? तो दिस वाज हिज आइडिया. Similarly we have Calvin who started Calvinism. This is also one of the sect of Protestantism. ठीक है? तो कैल्विन जो था, कैल्विन ने कहा था कि भाई गॉड ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि कौन हेवन जाएगा, और आपके एफर्ट से, आपकी डीड से ये चीज डिसाइड होने वाला कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा. आपका काम यहाँ पे क्या है? आपका काम है अच्छे काम करना, लोगों की हेल्प करना, मेहनत करना, राइट? प्लस फेथ. आपका काम है कि आपको प्रे करना है, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली चर्च प्लेन, देयर शुड बी नो स्टैचूज, देयर शुड बी नो डेकोरेशंस. एक आम क्रिश्चियन को बाइबल रीड करो, प्रीस्ट पे बहुत फोकस मत करो, right? And ultimately every believer should read the Bible, and through Bible he should develop that connection with the God. आपको जरूरत नहीं है किसी priest, ठीक है? That was the idea of Calvin, ठीक है? इसके अलावा एक और सेक्ट आया जो इंग्लैंड में आया, जिसको कहते हैं एंग्लिकन चर्च. तो बेसिकली क्या थे कि राजा थे किंग हेनरी 7 और किंग हेनरी 8. किंग हेनरी 8 ने कहा कि भाई मेरे को अपनी वाइफ को डिवोर्स देना है. तो ही आस्क्ड द पोप फॉर परमिशन. द पोप सेड नो. इन रोमन कैथोलिसिज्म डिवोर्स इज नॉट अलाउड, so you can't divorce. No, he was King Henry VIII was very fed up from his wife. So he said, भाई मैं तो जो डिवोर्स लेके रहूंगा, इसके लिए मुझे को कुछ रिफॉर्म लाना पड़ेगा. I will bring that reform. So the King of England, Henry VIII, established the Church of England. He called it as Anglican Church, and he said that in England, the king will be the head of the church. Everyone, including the priest, will be under him. Right? So ultimately, the king will decide what is right, what is wrong. Secondly, he said that in the Anglican Church, divorce will be allowed, and everything, all that practice, sermons will take place in English language and not in Latin language. So Anglican Church was mostly the reformistic form of Roman Catholicism. और क्योंकि हेनरी द 8 ने एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाया, England became more liberal. The role of religion in England reduced, and that's how England emerged as a superpower during the 17th, 18th, and the 19th century. Similarly, Zwingli, he was also a Swiss reformer, and he believed in simple worship by removing all the religious images. So these were the major four Protestant sects that emerged in Europe during the Reformation period. अब इनसे क्या हुआ? इनसे what was the impact of this Reformation? सबसे पहले कि before the Reformation had happened in Europe, there was religious unity in Europe. Everybody was Roman Catholic, right? And there were very few Jews who were persecuted. But after Reformation, there was religious fragmentation in Europe. तो यूरोप के में अलग-अलग जगह डेवलप हुए. कुछ लोग रोमन कैथोलिक रहे, कुछ लोग लुथेरियन बने, कुछ लोग कैल्विनिज्म की तरफ गए, कुछ लोग एंग्लिकन बने. तो देयर वाज रिलीजियस फ्रैगमेंटेशन इन यूरोप. सेकेंडली, इट आल्सो लेड टू पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस. तो दीज रिफॉर्मेशंस वीकेंड द अथॉरिटी ऑफ द कैथोलिक चर्च, एंड बिकॉज़ कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी वीक हुई तो किंग्स की अथॉरिटी स्ट्रेंथन हुई, ठीक है? एंड देयरफॉर इट लेड फाउंडेशन फॉर मोर सेक्युलर गवर्नमेंट्स इन यूरोप. थर्डली, इट आल्सो लेड टू कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल शिफ्ट, क्योंकि कैथोलिक चर्च का रोल कम होने लगा, राइट? लोग कैथोलिक चर्च के बाहर देखने लगे. तो अल्टीमेटली इससे क्या हुआ कि मोर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई, रैशनलिज्म डेवलप हुआ, और लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया जो भी चीजें गलत हो रही थी, ठीक है? एंड फाइनली जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये हुआ कि रिफॉर्मेशन सर्व्ड एज अ बेस फॉर द फ्यूचर आइडियाज दैट वर हैपनिंग, एनलाइटनमेंट एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ठीक है? तो दिस इज अबाउट रिफॉर्मेशन. नेक्स्ट वी मूव टू साइंटिफिक रेवोल्यूशन. साइंटिफिक रेवोल्यूशन का बेस क्या था? बेस था रिफॉर्मेशन एंड रेनेसांस. क्यों? क्योंकि रेनेसांस की वजह से लोगों ने स्टार्ट किया क्वेश्चन करना, लोगों ने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंटेशन करना. और रिफॉर्मेशन से क्या हुआ कि रोमन कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी कम हुई, एंड क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी कम हुई तो साइंटिफिक थ्योरी, तो पहले लोग बहुत डरते थे कि भाई हम ऐसा कुछ ना
एक्सपेरिमेंट कर दें कि वो चर्च के अगेंस्ट और हमें फिर हियरसे के आरोप में एग्जीक्यूट कर दिया जाए। क्योंकि रोमन चर्च की अथॉरिटी कम हुई तो पीपल स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग मोर, पीपल स्टार्टेड सेइंग मोर, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दिस साइंटिफिक रेवोल्यूशन हमारे पास हेलियोसेंट्रिज्म आया, निकोलस कोपरनिकस ने किया, गैलीलियो ने उसको और डेवलप किया, ठीक है। इसके अलावा सर आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटी इन्वेंट करी, ठीक है। एंड एनाटॉमी पे बहुत मेजर काम हुआ बाय दिस पर्सन कॉल्ड वेसालियस। वेसालियस इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ एनाटॉमी। जो डॉक्टर्स हैं उनको मालूम होगा कि बिफोर वेसालियस क्या होता था कि हम जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करते थे, जानवरों को डाइसेक्ट करते थे, एंड थ्रू दैट वी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मेडिसिन्स एंड द डिजीजेस। व्हाट वेसालियस डिड वाज ही स्टार्टेड डाइसेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, एंड थ्रू दैट जो मिसकंसेप्शंस थे पुराने कि भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, लीवर यहाँ होता है, ये यहाँ होता है, that got corrected and modern medicine was born, right? So ultimately that's how scientific revolution helped. तो उसकी वजह से क्या हुआ, because of scientific revolution जो साइंस था वो फेथ बेस से एविडेंस बेस की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है। एंड देयर वाज एक्सपेरिमेंट और देयर वाज एम्फसिस ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रैशनैलिटी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फेज में जिसको हम कहते हैं इनलाइटनमेंट। अब बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन है कि रेनेसांस क्या है और इनलाइटनमेंट क्या है, ठीक है ना। बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। रेनेसांस 14 टू 17 सेंचुरी तक हुआ और इनलाइटनमेंट 17 टू 18 सेंचुरी तक हुआ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इनलाइटनमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज द एज ऑफ रीजन, ठीक है ना। इट वाज अ इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल मूवमेंट जो 17th एंड 18th सेंचुरी यूरोप में हुआ था। एंड इनलाइटनमेंट वाज बेस्ड ऑन थ्री आइडियाज, द आइडियाज ऑफ रेनेसांस, द आइडिया ऑफ रिफॉर्मेशन एंड द आइडिया ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तीनों के आइडियाज को बेस बना के इनलाइटनमेंट इमर्ज हुआ, ठीक है। रेनेसांस जो था वो टेक्निकली इट फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाई रिवाइविंग द क्लासिकल नॉलेज कि जो हम भूल चुके थे उनको हम टेक्निकली वापस से स्टार्ट करें पकड़ना। इट वाज बेस्ड ऑन डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट्स, न्यूअर कॉन्सेप्ट्स लाइक सेक्युलरिज्म, लाइक ह्यूमैनिज्म, लाइक इंडिविजुअलिज्म, ठीक है ना। सो रेनेसांस वाज बेस्ड ऑन डेवलपिंग दीस कॉन्सेप्ट्स। एनलाइटनमेंट वाज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ दोस आइडियाज, एप्लीकेशन ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स ऑन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो अगर हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझें तो रेनेसांस gave birth to ideas. On the other hand, enlightenment was basically application of those ideas on various aspects of human life, which is society, polity and economy. That's the major difference between Renaissance and Enlightenment. Let's compare it. So Renaissance, the core focus was on revival of classical art, literature and humanism. This was the core focus of Renaissance, while Enlightenment was technically focusing on reason, logic, science and political philosophy, right? The primary goal of Renaissance was rebirth of classical knowledge and human potential. The main focus of Enlightenment was कि भाई ये जो ideas आप लेके आ रहे हो, इन ideas का use करके we want to reform the society through knowledge, ठीक है। जो की थीम्स थी Enlightenment की वो थी ह्यूमैनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड आर्टिस्टिक रियलिज्म, while the key theme of Enlightenment was equality, liberty, fraternity, progress, rationalism, right? The influence of Renaissance किस पे था? Ancient Greece और रोम का influence था, और Enlightenment का influence क्या था? Scientific revolution, that was the influence of Enlightenment, ठीक है। लीडिंग फिगर्स कौन थे यहाँ पे? लियोनार्डो दा विंसी, इरास्मस, पेट्रार्क, यहाँ पे जॉन लॉक, रूसियो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, all these people were there, right? अगर हम बात करें रेनेसांस की तो फोकस वाज ऑन आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एनाटॉमी एंड अर्ली साइंस। ऑन द अदर हैंड इनलाइटनमेंट में द मेजर फोकस it was on political theory, it was on society and it was on scientific methods. Similarly, if we talk about view on religion, so अगर हम जो हमने अभी तक देखा कि रेनेसांस के जो रिफॉर्मर थे, they were both secular but they were still religious. They did not challenge the authority of Bible, they did not challenge the authority of religion. They said that we have to reform the religion. But enlightenment के बहुत सारे thinkers were atheist. They did not believe very much in religion. They were against the organized religion, right? तो अगर हम बात करें की फीचर्स ऑफ enlightenment आइडियाज की, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास जॉन लॉक। जॉन लॉक, he wrote a book, Two Treatises of Government, and in his book John Locke was from England, and he said that there is a agreement between the rulers and the ruled.
So John Locke believed that every citizen has some natural rights, and these natural rights are technically life, liberty and property. ये natural rights है, ठीक है ना? अब ये जो काइंड ऑफ नेचुरल राइट्स हैं, ये टेक्निकली प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्टेट को लेके आए। क्यों? क्योंकि ही गेव दिस एग्जांपल, क्योंकि भाई अगर आप एक गांव में आपके लोगों के पास लैंड है, लोगों के पास घर है, लोगों के पास लेट्स से कुछ मशीनरी है, ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज अ थ्रेट कि वो सब चीज चोरी हो सकती है। तो हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है गार्ड्स की, जो हमारी लाइफ को, हमारी लिबर्टी को और हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। अगर गार्ड रहेगा तो हम रात में खुलेआम घूम सकते हैं, तो लाइफ रहेगी। अगर गार्ड रहेंगे तो हम छोड़ के जा सकते हैं, लिबर्टी रहेगी और हमारी प्रॉपर्टी सेफ रहेगी, ठीक है ना? सो ही सेड कि कॉन्सेप्ट ऑफ government only comes from कि people have some natural rights and these natural rights have to be protected and it is the government that protects these rights, ठीक है ना? So ruler get power from people's permission, ठीक है ना? And because the ruler get power from people's permission, इसीलिए जो गवर्नमेंट है that should be legitimate. अगर कोई गवर्नमेंट नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है तो अल्टीमेटली पीपल के पास राइट है कि वो उसको ओवरथ्रो कर, ठीक है ना? तो दैट इज द लॉजिक दैट वाज यूज्ड बाय पीपल इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो सही नहीं है, इसके बारे में हम कल देखेंगे, राइट? तो दैट्स वाज द जॉन लॉक्स आइडिया। Similarly the idea was of Rousseau gave this or he wrote this work called Social Contract. In the Social Contract he said कि भाई ultimately there is a social contract between the ruler and the ruled, राइट? और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि अल्टीमेटली जो हमारा स्टेट है और जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें इन चीजों में प्रोटेक्ट करे। एंड ही सेड दैट द गवर्नमेंट शुड बी वेरी लिमिटेड, राइट? एंड पीपल शुड हैव डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पीपल शुड डायरेक्टली डिसाइड कि उनको क्या चाहिए, ठीक है ना? सिमिलरली ही सेड कि लोगों की ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल की विल पे हमको होना चाहिए कि लॉ बननी चाहिए, बल्कि एक जनरल विल होनी चाहिए ऑफ द होल सोसाइटी कि सोसाइटी चाहती है कि सरकार ये चीज करे। अगर सरकार ये चीज नहीं कर रही है तो देयर इज ऑलवेज अ राइट, देयर इज ऑलवेज अ चांस कि जो लोग हैं वो रूलर को चेंज करें। तो डेमोक्रेसी का कहीं ना कहीं एक जो मॉडर्न डेमोक्रेसी हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से इमर्ज हुई, ठीक है? सिमिलरली मोंटेस्क्यू proposed the idea of separation of power in his book The Spirit of Laws. मोंटेस्क्यू said कि भाई अगर एक आदमी के पास सारी पावर रहेगी तो बहुत नेचुरल है, इट्स वेरी नेचुरल that person will get corrupted. It's very natural for that person to get corrupted. So it is important that the power should be separated. There should be three wings: the judiciary, the executive, and the legislature. And all these three wings should act as a check on each other. कि एक wing of the government के पास enough power ना आ जाए so that he can dominate. Because he said if any wing gets too powerful, then ultimately liberty of the people is suffered. इसके अलावा Voltaire was another champion which emerged. He was again a Frenchman, and he wrote a book, Candace, and he was a firm believer in freedom of speech and religion. He said that he gave a very very famous quote that people must be free to express opinion even if they are wrong, right? And he also gave a very important quote that I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it, right? So even if you are criticizing the state or the practices, you should have the freedom to do that. So freedom of speech, he was a firm believer in freedom of speech. He was a firm believer in religious tolerance and separation of state and the religion, right? He also criticized the church, but he was a believer in God, right? And he was a firm opposite, or he used to oppose the absolute monarchy. He used to say that there should be a constitutional monarchy and there should be a rule of law, ठीक है ना? So that is the idea of Voltaire. इसके अलावा there were other key people. Adam Smith, who believed that there should be a free market, the state which governs the least is the best state. So he said that market mechanism should be allowed to do everything. I think you must have studied in economics. Then there was a person called Diderot. Diderot was technically, he was the editor of encyclopedia, जो हम आज देखते हैं encyclopedia, जिसमें वर्ल्ड की सारी सब्जेक्ट्स की नॉलेज रहती है. So he was the first person to publish encyclopedia, जिसमें जितने नॉलेज थी उस समय, जितने भी लोगों ने जो आइडिया शेयर किए, वो सारे आइडिया को कंपाइल करके encyclopedia में उसको बनाया. और उस encyclopedia की वजह से सोचो लोगों को कितना अवेयरनेस बढ़ा. एक ही बुक में दुनिया भर की नॉलेज, right? So ultimately that increased the awareness and the literacy of the people in a very very significant manner. Similarly, Mary Wollstonecraft, she was called as the first important feminist, and she wrote a very good book, A Vindication of the Right of Women, in which she said, this is the person, she said that women are equal to men. Women are considered inferior to men because women जो है, women does not have
freedom to study. They are not educated. Because they are not educated, that's why they are considered as less intelligent compared to men. So if we provide the same opportunities and education to women, they will perform equally well as men. So, and she was also the firm believer in equal rights in marriage, right? So all these people literally liberated a medieval society and transformed them into a modern society, right? So what was the impact of enlightenment? Let's understand this, and then we take a break. तो पहला तो हम बात करें, we talk about political revolution. So political revolution में all these ideas, they were talking about democracy, secularism, constitutional monarchy. जब लोगों तक ये आइडियाज पहुंचे तो लोगों ने कहा कि यार हमारे यहाँ जो लोग रूल कर रहे हैं वो तो हमें ये कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो they are unjust, and because they are unjust, so they should be removed. And these philosophers laid the foundation for many revolutions that were taking place in the 18th and the 19th century. American Revolution, French Revolution, and Latin American Revolution. ठीक है? Similarly, कल्चरल और सोशल इंपैक्ट की बात करें तो सेक्युलरिज्म का राइज हुआ, चर्च की पावर कम हुई, ठीक है ना, साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज हुई, आइजैक न्यूटन, रॉबर्ट बॉयल, ऑल दीज साइंटिस्ट्स वर एबल टू इमर्ज बिकॉज ऑफ दीज आइडियाज. सिमिलरली एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए, यूनिवर्सिटीज बनी, इंसाइक्लोपीडिया से लोगों की नॉलेज काफी इंप्रूव हुआ, सेक्युलर लिटरेचर्स आना स्टार्ट हुए, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स इमर्ज बिकॉज ऑफ enlightenment. So in last 1.5 hours we have covered the journey how Europe from complete backwardness transformed itself into a modern society. Next, before we go for that, break, and after that we start